अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक यहाँ पर वेन्यू पर, जहाँ पर आज एक इवेंट है। तो जैसे कि आपको पता है, हमें 2 छुट्टियाँ भी हैं और इसकी स्पेशल जो क्वींस की जो है ना प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। 70 इयर्स हो गए हैं उसको अपने तख्त पर बैठे हुए। तो इसका क्वाइट लॉन्ग जो है ड्यूरेशन, तो उस पे 70 इयर्स पे वो प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर जो है पूरे मुल्क में तकरीबन 1500 से ज़्यादा जगहों पर बीकन्स जो थी, बहुत बड़ी टॉर्च। इसकी क्या पीछे इसकी जो है एसोसिएशन है वो मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ये बीकन यहाँ पर जलाई जाएगी और ये आप बैंड की आवाज़ भी सुन रहे हैं, बैंड परफॉर्मेंस भी होगी। तो आइए देखते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी देखता हूँ। और ये बड़ा यूनिक इवेंट है क्योंकि 70 इयर्स प्लैटिनम जुबली, अभी शायद हम दोबारा कभी इसको ज़िंदगी में दोबारा सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। लिए तैयार कर रहे हैं और सबके सामने उन्होंने आगे जो भी लिरिक्स वगैरह रखे हुए हैं और सबको बता दिया जाता है कि ये फ़लाँ अब हम जो है प्ले करेंगे। Marking the extraordinary reign of an extraordinary monarch. I'm sure you'll all agree. Remember this year, 2022, because the milestone we are celebrating and we're all part of will be taught in history lessons around the world for many years to come. I'm sure I don't need to remind you that this is the year which marks the 70th anniversary of the Queen's accession to the throne at the tender age of just 26. A beacon chain, once used as a tool for communication, has now become a symbol of unity across towns, borders, countries, and continents, and is often the central point of focus for an outdoor gathering or celebration. The beacon I'm about to light is one of more than 1,500, although I think they're now saying 3,500, being lit throughout the United Kingdom, the Channel Islands, the Isle of Man, UK overseas territories, and together with one in each of the capital cities of the Commonwealth countries, in recognition of the Queen's long and selfless service. As a special tribute to Her Majesty the Queen, a new specially commissioned song for the Commonwealth will be sung by choirs in all 54 Commonwealth countries at the same time as the lighting of the beacons. Enjoy the evening and the weekend, everybody.
ये गार्ड ऑफ ऑनर है, आर्म फोर्सेस के मेंबर, कैम्ब्रिज बेस्ड हैं, वो इस पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो जी व्यूवर्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से फिर चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक्स और कमेंट्स भी करें, क्योंकि मेहनत काफ़ी कर रहा हूँ। चैनल को मेरे को प्रमोट करें, सपोर्ट करें। आपकी जो है ना, आपकी वजह से ही मेरा चैनल चलेगा। तो मैं एफर्ट्स तो करता रहूँगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे जो एंड रिस्पॉन्स दें मुझे ज़रूर, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।